Okay. Okay, namaste everybody. I'm back the third time. Waiting for the audience to come back again. Oh. People have to find me. Okay. It's clear now. अरे वाह संजीव, चलो good. तुम सच्चे ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हो कि तुमने फटाफट पता किया और आ गए तुम लोग वापस प्लेटफॉर्म में. आई थिंक समथिंग वाज रॉन्ग विद द यूट्यूब लाइव. वो फिर स्टॉप करके करना पड़ा. सापड़ ले. हाँ. मिल गए. ठीक है. I've lost the audience and again I don't know how many people will join back again, but ठीक है. Just give us some time in terms of people finding me again and joining in. Chetan कह रहा है सर वापस. It's clear now. Okay, thank you Chetan. It was a YouTube challenge. Sometimes it happens that just waiting for the audience to come back. Sure. Maybe it's okay. We'll join. Okay. Okay, sir. अरे वाह वाह, सब लोग अभी बोल रहे हैं. संतोष वर्मा जी बोल रहे हैं. Good. प्रियंका बोल रही है. सर आवाज ठीक आ गई है. Okay. Yes, it has been a challenge in terms of आज होता ना हर एक कभी कभी एक दिन निकलता है, आपका एक मुहूर्त निकलता है जिस दिन आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी. तो शायद मेरा आज वही दिन चल रहा है. सो आज ये सिग्नल है सुबह सुबह से that be careful of technology. So I'm going to be cautious of technology today. क्योंकि ये सिग्नल है कि आज का मेरा 36 का आंकड़ा है टेक्नोलॉजी के साथ आज. चलिए. So absolutely. So good, Sanjeev, you brought that back. So I was talking about this very concept that things which are not in a control, things which are indirectly of control of yours, and things which are in absolute control of yours. So what was in my control was कि मैं इसको stop करूं, like some of you suggested. I stop it and I restart the live streaming. तो वो मैंने किया. And what was not in my control was how YouTube would function, how this voice, this audio thing would function. तो मेरे कंट्रोल में नहीं था. So अब उसके बारे में फंस करके, उसके बारे में प्रॉब्लम क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है. उसके बारे में गुस्सा करके कोई मतलब नहीं है. What was in my control to stop it, to restart it, वो मेरे कंट्रोल में था, वो मैंने किया. शायद ऐसा होता कि वापस रीस्टार्ट करके भी मेरी वॉइस उतनी क्लियर आप तक नहीं पहुंचती. फिर मेरे कंट्रोल में क्या होता, फिर शायद एक बार मैं करता, या फिर मैं सोचता कि नहीं आज मैं करता ही नहीं हूं. Either of the things would have happened. So when it comes to being productive, when it comes to being unproductive, the difference is where are we putting our efforts? Are we putting our efforts in areas which are directly in control of us, or are we putting our efforts in areas which are out of our control, or are we putting our efforts in areas which are somewhere indirectly in our control? So जो directly हमारे कंट्रोल में है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. You got to be self-aware and keep on asking yourself कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको और बढ़िया कैसे बना सकते हैं. दी सेकंड कैटेगरी जो मैंने आपसे बोला कि जो आपके इनडायरेक्टली कंट्रोल में है, कि वो डायरेक्टली आपके पास नहीं है बट इनडायरेक्टली आप कुछ इफेक्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल द बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड, और मे बी द बिहेवियर ऑफ टीम मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये आपके कंट्रोल में नहीं है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली तो आप इन पे इन्फ्लुएंस ला सकते हो. So there are many ways by which you can influence the behavior of other people. You can influence their behavior by learning some skills of communication. You can influence their behavior by the way you are setting an example in front of them. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसको आपने मास्टर करना चाहिए अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं. एंड एज अ लीडर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दैट यू काइंड ऑफ uplift the behavior of people around you. बिकॉज आपका उन पे इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है. एंड वो
जिम्मेदारी आपकी होती है एज अ लीडर कि आपके अंडर में उनका बिहेवियर कैसा है. And that's where your skills of persuasion, your skills of convincing, your skills of communicating, your skills of leading, your skills of making things simple for them, ये सारी skills की आपको जरूरत पड़ती है because you are dealing with situations which are indirectly in control of you. And maximum productivity happens when people, they focus on areas which are directly in control, and they're able to influence other people around them to also be productive, and that's how the productivity will be at its maximum. But जाने अनजाने में लोग जो है अपना फोकस डालते हैं उन एरियाज में जहां पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता. सो ये कौन लोग होते हैं? ये कौन लोग होते हैं जो जाने अनजाने में अपना फोकस वहां डाल देते हैं जहां पर रिजल्ट नहीं आता? तो ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड इज नॉर्मली डिवाइडेड बिटवीन टू काइंड्स ऑफ पीपल. One who are proactive, and second who are reactive. So proactive people are the ones who say that I take charge of my life, I take charge of my behavior, I choose my response, I have an ability to choose my response. ये proactive लोग बोलते हैं. Reactive लोग जो है, they are on a state where they react to things around, they react to situations around, they don't think, they don't feel, they don't believe that they have the ability to choose the response. If I were to give an example of who reactive people are, uh, if you have a cockroach somewhere, in your house, and वो cockroach जो है, जैसे ही वो sense करता है कि कोई और इंसान, कोई और चीज उसके आसपास है, that cockroach reacts means it knows only two functions. या तो वो अपने आप को बचाएगा, या वो उस चीज से लड़ेगा. It will either fight or it will either flee. It's a reactive creature, right? So if it's a big organism in front of him, कोई बड़ा अगर इंसान आ रहा है, कोई पक्षी आ रहा है, तो वो it will not fight, it will flee. It understands this. अगर कोई छोटा है, कोई और छोटा इंसेक्ट है, उसके मुकाबले का, so maybe the cockroach will decide to fight. So it's a reactionary way of living and existing on this planet. Same is the case with all creatures. Majority of the creatures. It's only human beings who have this ability to not react, but to choose a response, choose a behavior, choose a communication, choose an emotion. तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारी लाइफ में अगर है, जिसको आप पकड़ सकते हो, तो वो है चूज. आर वी चूजिंग समथिंग, और आर वी जस्ट लाइक दैट कॉकरोच who's reacting to things happening around? And the more you use this human faculty called choose, the more you will become productive. That is for sure. So, दिन भर में हमारे आसपास, हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स तो 100% हमारे कंट्रोल में है. हम क्या जवाब देंगे, हम कैसे बिहेव करेंगे, ये तो 100% हमारे कंट्रोल में है. To give you an example of what self-awareness is, आप मुझे अभी सुन रहे हो. I just want you to imagine कि आप अगर सुन रहे हो, can you take your consciousness out of you and can you imagine you watching you? और मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, तो आप ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप कर पाओगे कि you are sitting there and you're watching yourself there. Can you just think on what you're thinking, what thoughts are going in your mind, and you'll see that you'll be able to connect, you'll be able to think about what you're thinking. अच्छा, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ. If I were to ask you, can you identify what emotions or what moods or what mood you're in right now? So you may realize that you are maybe angry, you're maybe calm, you're composed, or maybe you're happy, or you maybe you're jealous. तो आप देखो कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप अवेयर हो पा रहे हो कि आप कैसे बैठे हो, आप अवेयर हो कि आप मुझे कैसे सुन रहे हो, आप अवेयर हो कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप अवेयर हो, आप कॉन्शियस हो कि आपके मन में कौन से इमोशंस चल रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. और ये सेल्फ अवेयरनेस की काबिलियत, ये सेल्फ अवेयरनेस का की पोटेंशियल, ये सिर्फ इंसानों के पास है.
सिर्फ इंसान ही अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर हो सकता है। सिर्फ इंसान ही अपने आप से ऊपर उठ के अपने आप को देख सकता है कि वो फिजिकली कैसा है, वो मेंटली कैसा है, इमोशनल वाइज कैसा है। इफ यू वुड, अगर आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप समझोगे कि ये बहुत बड़ा वरदान है, दैट यू आर एबल टू काइंड ऑफ बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ। और इस सेल्फ अवेयरनेस के साथ जब आप जिंदगी जीते हो, this consciousness in which is in you, that I can be aware of my moods, I can be aware of my emotions, then you can choose which emotion you should have right now. If you are aware, if you can be aware of your thinking, you can choose what thoughts I should have right now. If you can be aware of the way you are behaving, you can choose a behavior for yourself. और वो कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, कौन सा इमोशन होना चाहिए, कौन सा थॉट होना चाहिए, वो चूज करने के लिए हमें एक और चीज दी गई है, जिसका नाम है इंटेलिजेंस। तो पहले बात, सबसे बड़ी क्लैरिटी, कि हमारे पास काबिलियत है चूज करने की। ये क्लैरिटी और ये जागरूकता हमेशा अगर रहेगी आपके पास, या ज्यादातर समय में रहेगी आपके पास, यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। फॉर द टाइम्स व्हेन वी हैव नॉट बीन प्रोडक्टिव आर द टाइम्स व्हेन वी हैव बीन रिएक्टिव। And reactive ka matlab, we have not been choosing the way we will interact with the world, the way we will behave with the world, the way we will be emotionally with the world. वहीं पर हम unproductive हो गए. So it is just a matter of practice. For example, today, throughout the day, today and tomorrow, the entire week, but I'm just saying for today, can you become more aware of how you are only physically? मैंने आपको तीन चीज बताई, physically, emotionally and thought wise, mentally. उनमें से एक चीज पकड़ लो आप, let's say physically. तो just be conscious throughout the day कि आप physically चल कैसे रहे हो, आप physically बैठ कैसे रहे हो, आप चेयर से उठते हो, चेयर में बैठते हो, आप वॉक करते हो, आप जब लोगों से बात कर रहे हो, आप उस समय फिजिकली कैसे हो। अगर आप अवेयर हो जाओगे, सेल्फ अवेयर हो जाओगे, एक बात तो पक्की है, यू विल बी, नेक्स्ट टाइम यू विल बिकम, यू वुड वांट टू बिकम बेटर फिजिकली। अगर आप अपने चलने के तरीके को लेके अवेयर हो गए, तो आप देखोगे कि इसमें चलने का तरीका और अच्छा हो सकता है। आप लोगों से बात करते समय अपने आप को देखोगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरा मेरा ओवरऑल स्पाइन अगर मेरी इरेक्ट है कि नहीं है, मेरे कंधे स्लाउच कर रहे हैं कि नहीं, मेरे आंख आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं। द मोर यू बिकम अवेयर एंड कॉन्शियस, द मोर यू विल बी एबल टू करेक्ट योरसेल्फ। सिर्फ एक दिन, 2 दिन आप सिर्फ फिजिकल अवेयरनेस पे लगाओ, यू विल बिकम द बेस्ट टीचर फॉर योरसेल्फ, यू विल बिकम द बेस्ट गाइड फॉर योरसेल्फ, एंड आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। Once you have clarity on this, then maybe take it to the next level, where just few days you become conscious of your thinking process, कि मेरे मन में चल क्या रहा है, अरे मैं अभी क्या सोच रहा हूं। And the more you become aware of your own thinking process, the more you will realize क्या थिंकिंग गलत चल रही है और क्या थिंकिंग सही चल रही है। बिकॉज आपका इंटेलिजेंस जो है ना, वो तो 24 आवर चालू है। पर वो इंटेलिजेंस कैसा होता है, जब वो आप अवेयर होते हो, आप जब आप बाहर निकलते हो और खुद को देखते हो, then your intelligence is able to guide you in the right direction. So just be conscious of your thinking process for a few days. And आपको समझ में आएगा कि majority of your day, majority of your life you're living without being conscious. आप जागरूक ही नहीं हो अपने बारे में, आप सिर्फ जीते जा रहे हो। So the more conscious you become, the more you realize there is a scope for improvement, and that area of improvement will increase your productivity. That's the most simplest way to understand and work on yourself. So just take it as an assignment for the next year, अगला हफ्ता जो आने वाला है, that I'll be more physically aware of myself, जितना हो सके, right from the basics of your physical self, कि आपका चलना कैसा है, that's the basic. Just be conscious of your walk. Is that a walk of confidence? Is that a walk which is slouchy? Is that a walk which I'm dragging myself? Just become conscious. और जब आप कॉन्शियस होते हो ना,
तो आपको सही होने के तरीके मालूम पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जैसे बैठे हुए हो और मुझे सुन रहे हो, आई डोंट नो बैठे हुए सुन रहे हो या गाड़ी में सुन रहे हो या आप चलते हुए सुन रहे हो, आई डोंट नो। इमेजिन करो कि स्क्रीन में मेरी जगह आप आ गए एंड सडनली यू आर सीइंग योरसेल्फ, व्हाट विल यू डू? Suddenly you will kind of adjust yourself in the chair and you will sit properly if you're sitting. If you're walking, you will start walking in a much more different way because you're seeing yourself on the screen. अरे यार ऐसा दिख रहा हूं मैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है. This is called being aware. So the more you are in that, और ये काबिलियत है हमारी कि हम अपने से ऊपर उठ के अपने आप को देख सकते हैं, which is not there in any other creation. So let us be more human. Let us be more of what we are or with what we are supposed to live. So being human is not about a print word हमने डाल दिया t-shirt में कि being human. Being human is more about you living by the virtues which you have been blessed with. कि कुछ हमें चीजें दी गई हैं, कुछ वरदान मिले हैं भगवान से, क्या उन वरदानों को हम यूज कर रहे हैं? और या फिर हम किसी और जानवर की तरह हम जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उसको वो वर्च्यू नहीं मिला है, उसको वो ब्लेसिंग्स नहीं मिली है कि वो खुद से उठ के वो सोचे कि एक कॉकरोच खुद से बाहर निकल के देखे कि मैं ये जो फिजिकली वॉक कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं है, या फिर मे बी योर पेट डॉग is conscious and aware that the way I'm sitting, I'm sleeping, I'm moving around, I'm wagging my tail, is that the best way to wag tail? ये आपके पेट डॉग को ये ब्लेसिंग नहीं है कि वो एक बार ऐसा बैठ के सोचता है कि मेरे मन में चल क्या रहा है. No other creature on this planet has this ability. Only we human beings we have this ability. So Aj, I just want to share this with you that let's take this ahead. Let's take this ability of ours to the next level. And I promise you, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बिना किसी किसी किताब को पढ़े हुए, बिना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को करे हुए, बिना किसी बाहर के इनपुट के, आपका ये खुद का इनपुट कैन मेक यू सो वेरी पावरफुल. आपका एक खुद का इनपुट कैन चेंज द वे यू विल लिव योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर. हाँ जी. कुछ कनेक्ट हुआ? ऑल ऑफ यू आर लिस्टिंग एंड is there some takeaway for you from this, from what I shared? And if there is any insight or any query from your side, please you can throw that query and that question to me, or you can also share your insight with me. हाँ जी, हो कि नहीं मेरे साथ, पहले तो ये बताओ. So tell me what you will do this week. क्या करोगे आप लोग? So out of the three things which I've asked you, the first and foremost and the most simplest of things is just be conscious of your physical self. अपने physical self पे focus करो. Practice that for the next few days till you are living your life out of 5% of being physically aware. Then 5 को बढ़ाओ, फिर 10% पे लेके आओ. तो अगर आप 20-30% टाइम अपने दिन भर में आप कॉन्शियस हो सकते हो अपने फिजिकल सेल्फ के बारे में, you will see that there will be dramatic improvement in the way you will present yourself to the world. That's for sure. और फिर वहां से आप इसको आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ. थोड़ा you can have your ways to be conscious. Maybe you can एक reminders रखो अपने लिए that I have to be physically conscious. I have to be physically conscious. तो reminders रख सकते हो. Maybe on your desktop you can have that's the screen जो होती है उसमें आप लिख दो I'll be physically conscious. Maybe in your room, in your bedroom, you put up a small poster, be physically conscious. तो ये reminders हैं आपके पास जो आपको रिमाइंड करेंगे कि हाँ आपको ऐसे जीना है, बिकॉज यू कैन गेट लॉस्ट इन योर लिविंग ऑन अ डेली बेसिस. और फिर आप एक बार खो गए अपनी जिंदगी में तो फिर याद भी नहीं होता कि आपने ऐसा कुछ सुना था या देखा था या ऐसा कुछ होना चाहिए था. सो वी ऑल नीड रिमाइंडर्स. एवरीबॉडी नीड्स रिमाइंडर्स इन लाइफ.
कोई भी इंसान एक बार सुन के उसके जिंदगी में वो बात हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा नहीं होता है. You need somebody to remind you. You need life to remind you in some ways. So have some reminders for you. Will take my photo and try to remind myself. Okay, modify myself. Hmm. So I'm sure, as an advocate, Sanjeev, you might be there in the court, and you might be there defending or your client there. So you need to understand that what role body language plays there. So the way you are presenting yourself makes all the difference. So see as much as possible. That's why when it comes to public speaking, one of the things which I would always recommend, आजकल तो कैमरे आ गए हैं, and it's easy. During आज से 15-20 साल पहले, there were no cameras on the mobiles. People would not have the facility to record themselves. So I would always suggest and recommend that look at yourself in the mirror and practice your speech. And every speaker who has become a great speaker has done this n number of times, where he or she has seen himself or herself on the mirror, in the mirror, and practiced. तो जैसे ही आप अपने आप को देखते हो अपने सामने, तो आप खुद को देख रहे हो कि आप फिजिकली कैसे हो, एंड सडनली यू बिकम कॉन्शियस कि मुझे कैसे बात करनी है, कैसे मुझे हैंड्स मूव करने हैं, कैसे मेरा आई कांटेक्ट होना चाहिए, कैसे मेरे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, बिकॉज आप कॉन्शियस हो अपने बारे में, आप जागरूक हो अपने बारे में, राइट? So when you are more self-conscious, you become much better. But हम लोग जो है, most of us, we are not self-conscious, we are people conscious. कि लोग क्या कहेंगे? I'm just saying, लोगों का छोड़ो, you become self-conscious. खुद के बारे में जागरूक हो जाओ कि तुम अपने बारे में क्या कैसे देख रहे हो. The moment you see yourself, that makes all the difference. So this is the assignment for all of you for this week. That I spoke about two things with all of you. One is आपके आसपास situations होंगी where you will be in control of situations directly. There will be situations जहां पर आप indirectly control में हो सकते हो, and there will be situations जहां पर आपका कोई control नहीं है. तो logic क्या बोलता है, intelligence क्या बोलता है, that intelligence बोलता है, can we focus our time and energy on things which are directly in our control, and learn how do I deal with situations which are indirectly in my control. How do I handle that? So can I learn? So एक जो मेरे कंट्रोल में है उसमें फोकस करूं, और एक मैं सीखूं कि जो मेरे इनडायरेक्टली कंट्रोल में है उनमें से मैं कैसा रिजल्ट्स लेके आऊं. और तीसरा, जो बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं है उसमें समय लगा के भी क्या करूंगा. तो उसमें तभी समय लगाऊंगा जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा आज. तो अभी सब हो गया, काम हो गया, मस्ती हो गई, दोस्तों से बात हो गई, घर में टाइम दे दिया, सब जो करना था आज कर दिया और टाइम बचा हुआ है. तो फिर आप किसी को फोन कर लो और फिर आप बात कर लो कि यार ये देश कैसे चलाना चाहिए. तुम फिर डिस्कशन कर लो, ये दुनिया में क्या होना चाहिए, ट्रम्प ने कैसे बिहेव करना चाहिए, तुम डिस्कशन कर लो, चलेगा. लेकिन सारे काम छोड़ के यही करने बैठ जाते हो कि ट्रम्प ने क्या करना चाहिए. अरे भाई, आप हो कौन? एक तो अमेरिका के सिटीजन भी नहीं हो. राइट? तुम्हारी सुन कौन रहा है? यू गो एंड यू वॉच अ क्रिकेट मैच देयर, और अभी आईपीएल चालू होने वाला है. यू विल गो एंड वॉच द मैच देयर. आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ. द ओनली थिंग व्हिच यू हैव इन योर कंट्रोल इज आप मैच देखते समय मस्ती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैच देखते समय आप सेलिब्रेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? लेकिन आप वो सब छोड़ के यू गो इनटू द स्ट्रेटेजिक साइड ऑफ द मैच. नहीं, इसने इसको यहाँ प्लेस करना चाहिए था, अरे इसने इसको बॉलिंग देनी चाहिए थी. अरे आप हो कौन? You're not a part of the selection committee. You're not part of the coaching team. You're not even in the playing 11. और आप जो है अपना टाइम वहां लगा रहे हो. Your job is there as a spectator. That is absolutely in our control. Play that role. Maximum you will see some maybe a friend of yours जो आपके साथ आया है वो मस्ती नहीं कर रहा है, वो गेम को एंजॉय नहीं कर रहा है. So use some skills of yours to make him enjoy. That is in your control. बस और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है. So
द कहने का तात्पर्य यह है मेरा आपसे आज इस एचएम के थ्रू कि बी कॉन्शियस कि आपका फोकस कहाँ जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, फिर मैंने आपसे बात करी कि कैन यू बी मोर सेल्फ अवेयर ऑफ योर फिजिकल सेल्फ, योर थॉट वाइज सेल्फ एंड योर इमोशनल सेल्फ, and the more you are conscious, the more you will be able to choose the right behavior, the right thought, or the right emotions. And the more we are able to choose the right thought, emotions, physical self of ours, the more we become productive in the world. दो सिंपल बातें मैंने आपसे करी, एंड आई विश एंड आई बिलीव दैट ये आपके लाइफ को अच्छा बनाएंगे इस हफ्ते। सो with this, I take your leave for this for today's Happy Minds. This was Happy Minds number 1230, 1230 Happy Minds hai. And we moved on from Zoom to YouTube Live. तो थोड़ा सा हल्का सा disconnect है in terms of audience is also not used to coming on YouTube. We are also struggling at times with the technology here. We have brought in some software and things like that, which we are coping with. Let's see how this shapes up in the next few weeks. So till the time, bear with us, and do share, do subscribe, do like whatever it is said in this world of social media. Do tell the world to be here, and do spread this channel if you liked what we shared. अगर आपको अच्छा लगा होगा, do share it with your friends and relatives, and let's live and let's make a great life for ourselves. Okay, and I'll see you next week in the Happy Minds number 1231 with some with another set of insights for all of you, and you can also throw in some questions if you have. And I will share with you as in when I have your questions. We will share those insights with all of you. And if you want to know what we are into, what programs we do get in touch with my team, or do get in touch with our office, or do send us a message. We are into empowering entrepreneurs. So we are into coaching, mentoring entrepreneurs to help in their businesses. We also are into making people become much more confident, powerful in their personal lives. We are into making organizations perform and build on a second line of leadership. That's what we are into. So आपको लगता है कहीं पर भी in terms of your business side, we would be able to add on, we would be more than happy to add on in your lives. So we have a 4-hour program of mine, which is my flagship program called the Entrepreneur Growth Summit, which is coming up next month. And it's going to be an offline program, not an online program. वो 4 घंटे अगर आपको मेरे साथ बिताने हैं in understanding how else and what else can be done in your business, what can be done to make your business much more simpler, much more organized, and much more rewarding. तो फिर वो 4 घंटे मेरे साथ बिताइए. We'll go through a beautiful journey of making you understand how on what else can be done in business. Not that आपको मालूम नहीं है, आप business तो कर रहे हो, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं to make our businesses better. So that's for now from my side. Make a great life, and see you all next week with another subject, and maybe a few success stories. I'll also share with all of you with stories which have come to me from so many Chrysalians and participants. I'll select a few to share with all of you. So love you. God bless. PRG 6483, another powerful session, sir. Thank you. Ariva, love you so much. Yogesh, God bless you. Thank you, Sanjeev. God bless. Kishore, God bless you too. Love you, Prashant. Priyanka, God bless. Jayesh, love you too, Jayesh. You can also share if you are not from Pune. So I'll come to know आप लोग कहाँ से हो, because I am Pune based. So if you're from outside Pune अगर आप आते हो, so I'll also come to know you're from which city. Love you, Koja. God bless. Focus on things which are directly in your control and become more conscious of yourself.
Love you, Vishali. God bless. ये रोहित शर्मा फैन कौन है? Mamta, God bless. Yes. Komal, अच्छा जी, Komal. Love you, Komal. Naresh, Naresh, वाह वाह वाह, सही नाम. Pankaj Singh, God bless Pankaj. Anshul, God bless. Saurabh, love you too. Navnath, mm, Fintech, chalo, God bless. I'm logging out right now, and we'll have much more organized way of streaming this Happy Minds next week for sure. तो अब ये 2-3 बार हम बीच में ट्रायल करेंगे with the new software and we'll make it happen the best possible way. चलिए, God bless you. Namaste and make a great week for yourself and make a great life. God bless.